Hello, good morning, Shelly, Sharita, Sanskriti, Muskan, Ferdin, Depriya, Aman. I hope I'm audible. Taslim, I hope I'm audible. Yeah. So today I'll talk about Panchayat now. In the last class, we discussed, the historical background of the Panchayat basically. We saw the history, right? We have seen, the village has remained a unit of administration in India since antiquity. बहुत दिनों से ऐसा था. Now, during freedom struggle, there was an idea that Panchayat should be the basis of the political unit and administrative unit in India. Gandhi was a, you know, advocator of the village Panchayat, right? The Gram Swaraj he talked about, the village republic. On the other hand, we have seen Ambedkar who opposed the idea of village Swaraj, right? He reduced village to the caste atrocities basically, and he focused individual should be the unit of administration. And then thereafter we saw not only Ambedkar but also other leaders were in support of making individual as a unit of political and administration, as well as they wanted a more strong nation state based on military. Look at Nehru, who was in favor of uh, heavy industrialization, right? Now it was a first 5-year plan when the government implemented community development program, right? But it failed miserably. Then it appointed a commission that is called Balwant Rai Mehta Committee, and that Balwant Rai Mehta Committee suggested three tier of the panchayat, right? And thereafter Nehru inaugurated three tier of panchayat at Nagaur district of Rajasthan. Okay? And during Nehruvian era, if you see, panchayat flourished in India. But later on, we saw during Indira Gandhi, there was a concentration of power, right? Democracy declined within the Congress party, right? And you know, outside of the Congress party as well, we saw that Indira Gandhi imposed emergency. That was a height of centralization, right? Emergency transformed India into not a federal but a unitary state. ठीक है. उसके बाद फिर we discussed Janata Party government, right? Janata Party established a committee. What was the committee name? Ashok Mehta. And Ashok Mehta, uh, proposed two type of panchayat. What was that? Mandal Panchayat and Jila Panchayat. ठीक है? ठीक है. And then again return of the Indira Gandhi we saw, and during Indira Gandhi it remained unpopular, right? And inactive. Now Rajiv Gandhi, set up several committee. कौन सा committee था? VKV Rao committee, LM Singhvi committee, PK Thungan committee. The last two committee, the LM Singhvi committee and PK Thungan committee, recommended to give constitutional status to the panchayat, and 73rd Constitutional Amendment Act was passed. Right? Today we are supposed to look at 73rd Constitutional Amendment Act and its provision. ठीक है? कि क्या हुआ, इसका क्या impact पड़ा, that we will see. Now if you look at 73rd Amendment Act, January 21 now. If you look at 73rd CAA, right?
it inserted a new chapter in Indian, constitution. What was that? Article, chapter 9. Inserted new chapter, titled as chapter 9, titled as Panchayat. It inserted also inserted article 243 to 243O, right, which deals with several provision of the Panchayat. Panchayat, right? And it also inserted 11th schedule, right? Inserted 11th schedule, right? Consisting 29 items on which the panchayat has power to govern. ये इंसर्शन था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. क्या क्या? एक चैप्टर 9 था, राइट, जहां पर वी हैव आर्टिकल 243 to 243O, which deals with the several provisions of the article of the panchayat. Then it is inserted, right, 11th schedule also, which consists how many items? 29 items that has been given to the panchayat, right? Now if you look at, nahi dikh raha hai? Now if you look at the 73rd constitutional amendment, it has several salient features. For example, 73rd constitutional amendment act, added one provision, that is article 243G, which talks about the objective of the panchayat. If you look at the objective of the panchayat, there are two. Majorly, there are two, right? First, to prepare economic development plan of the village, and secondly, to ensure social justice. Got the idea? Right? Moreover, there are other salient features of the 73rd Constitutional Amendment Act. Look at, one by one. Salient features of the 73rd CA. क्या क्या था? Right? The first was recognition of the Gram Sabha. Recognition of the Gram Sabha. पहले प्रॉब्लम क्या थी पंचायत में कि स्ट्रक्चर वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राइट? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि कुछ चीजें फिक्स कर दी, राइट, और कुछ चीजें स्टेट पे छोड़ दी कि भाई आप देखो अपना कानून बनाओ और अपने हिसाब से पंचायत को इंप्लीमेंट करो, राइट? कुछ चीजें उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई ये सब काम करने पड़ेंगे, right? We will focus on the mandatory things that was mandated by 73rd Constitutional Amendment Act. उसमें पहला था recognition of the Gram Sabha. Now, what is Gram Sabha? Gram Sabha is a basic unit. You can see that Gram Sabha is a basic unit of the panchayat, consisting all the members, included in the electoral roll of that village. Electoral roll of that village. ठीक है? अगर गांव में कोई इलेक्टोरल रोल है, मतलब इलेक्टोरल रोल, उसमें कौन, यही है ग्राम सभा, इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज.
What is Gram Sabha? Gram Sabha consists all the adult member, above the 18 years, right? But also included in the electoral roll of that village. ऐसा नहीं कि electoral roll से बाहर है तो ग्राम सभा का member नहीं है, right? अच्छा, ग्राम सभा का काम क्या है? What is the work of the Gram Sabha? The work of the Gram Sabha is to discuss and deliberate the local issues. Look at the objective of the Gram Sabha. What was the objective? Objective, you know, to discuss, right? No, to discuss local issues, right? Basically, Gram Sabha is like, you can say that the Gram Sansad. Have you heard about Sansad word? The parliament. The village, it is a village parliament, right? Basically, village parliament. अच्छा, village parliament में क्या होता है? It's deliberation basically, right? So Gram Sabha is a deliberative institution. It's not executive body. It is a deliberative institution. Got the idea? Right. Now, that was a recognition mandated by the 73rd Constitutional Amendment Act. Right. Now, second, if you look at, right, there is a uniform structure of the Panchayat. Uniform structure of the Panchayat. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि भाई देखो, ऐसा स्टेट जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, वहां पर कम से कम 3 टायर्स ऑफ पंचायत होनी चाहिए. ठीक है, ज्यादा 4th टायर हो सकता है, आप 5 टायर बना लो, वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग, बट एटलीस्ट 3 टायर ऑफ पंचायत यू हैव टू एस्टैब्लिश. ठीक है. नाउ what happened? Why is it so? Because if you look at a few states had 4 tier of panchayat like Bengal, few states had only 2 tiers of the panchayat, so there was a different structure, there was no uniformity. Okay, so 73rd Amendment Act basically made a uniform structure of the panchayat. ठीक है, इसने क्या कहा कि भाई 3 tier of the panchayat होगा कहां पर? In all states whose population is more than 2 million, 20 lakh. जहां पर 2 million पॉपुलेशन से कम है, वहां पर the middle level can be exempted, right? So 3 tier of panchayat, 3 tier of panchayat had been established. Right. अब ये 3 tier of panchayat कौन सा था? The village panchayat, yeah, the gram panchayat at village level, second, that is called panchayat samiti, ब्लॉक पंचायत कह दो, पंचायत समिति कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नाम है, पंचायत समिति at block level, right? And third क्या है? Right, जिला परिषद, yes, जिला परिषद at district level. At district level, note जरा एक नोट लिख लीजिए. The state having population less than 2 million, the state having population less than 2 million can exempt the state having population less than 2 million can exempt the middle level of the panchayat. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड फीचर्स according to 73rd Constitutional Amendment Act. Have you noted down?
लिख रहे हो ना धीरे धीरे, नोट इट डाउन। जहां पे समझ में ना आए, मोस्ट वेलकम टू इंटरवेल। Now third was, election. Election, right, of members and chairperson. Of members and chairperson. Yeah. सी क्या होता है कि लोअर लेवल पे हर गांव का एक पंचायत बटा हुआ है, इट्स अ बाउंड्री। एंड ये बाउंड्री कौन डालता है? गवर्नमेंट में कौन, पता होना चाहिए। हु ड्रॉज द बाउंड्री ऑफ द पंचायत? It's delimitation commission. State, it's a delimitation commission, right? राइट और ये काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। राइट तो ये एक तो आपका विलेज पंचायत हो गया, राइट। बहुत सारे विलेज मिलाकर के एक ब्लॉक पंचायत होता है जिसको पंचायत समिति बोलते हैं। बहुत सारा विलेज होता है और फिर आप जब जिला पे जाएंगे तो बहुत सारे ब्लॉक होता है, बहुत सारे ब्लॉक मिलकर के एक जिला पंचायत बनाता है। ठीक है, यही पूछा था, मैं क्या पूछा? पोस्ट ऑफिस बता रहे हो? पंचायत समिति। सी ये वैरी करता है स्टेट बाय स्टेट भी। As I told you that there are 28 states where panchayat is functioning. We'll talk about certain, I'm not a specialist on what is there, right? We'll talk about the something which is common to all the states, right? If something is different to, as I told you yesterday, the panchayat of Kerala is different the panchayat of Haryana, right? Panchayat of Karnataka is different from the panchayat of Bengal. ठीक है, so there may be different ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द पंचायत, बट ये चीज जरूर होगा कि भाई ग्राम पंचायत होगा, राइट, ग्राम सभा होगा वहां पर। ठीक है, एक 3 टायर, बंगाल में 4 टायर है अभी भी, देयर आर 4 टायर्स ऑफ पंचायत। फाइन, ठीक है। तो जहां पंचायत समिति हर पंचायत में है वहां पर, एज यू स्टेटिंग, हाँ, पार्षद पंचायत में देखो ब्लॉक लेवल पे पार्षद है, पार्षद तो इधर होता है अर्बन लोकल बॉडीज में होता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा चेक करना। पंचायत में भी जो पंचायत का हेड होता है, राइट, लेजिस्लेचर को, उसको कहीं पर प्रधान कहा जाता है, कहीं पे मुखिया कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, अलग अलग। ठीक है, सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, राइट, इन द पंचायत। पंचायत इज a state subject, let me tell you. Fine. तो ये 3 informal structure of the panchayat every state has to follow. Now then I talked about election. Did I talk about election? No, not yet. ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि जितने भी मेंबर है पंचायत के, जितने भी मेंबर है पंचायत के, दे शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड, राइट। लिखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द पंचायत at village, intermediate, all members of the panchayat at village, intermediate and district level shall be elected. ठीक है, यहां नॉमिनेशन का कोई रूल नहीं है। All panchayat at
village, intermediate and district level shall be elected. ठीक है? So that is election. One more point लिखिए. The chairperson of the panchayat shall also be elected. The chairperson of the panchayat shall also be elected. Now fourth is very important, reservation. Reservation. And that is Article 243D. अब देखेंगे कि 73rd Amendment Act से पहले there was no reservation of SC, ST or women in the panchayat. So panchayat was a club of the dominant caste. Right? Now what 73rd Amendment Act did, basically it made panchayat inclusive and more participatory. Inclusive, representative and participatory. So what it did, it reserved 1/3 seat for women, right? And also seats for SC, ST in proportion to their population, right? Reserve, that is reservation. For SC, STs in proportion to their population. ये 73rd Amendment Act ने किया. Later on, if you look at, other several states like Bihar Panchayati Raj Act 2005 given 50% reservation for women. Now later on several states followed it. इसको लिखा 1/3 seats for women, reserved for women. Seats were reserved for SC, ST in proportion to their population. Now one more line you add. This provision made panchayat inclusive. This provision made panchayat inclusive and participatory. What the idea? Now fifth is about duration of the panchayat. Of panchayat. पहले क्या था कि in absence of regular election, right, एक मुखिया चुने गए and that वो मुखिया 10 साल तक 20 साल तक मुखिया जी है पंचायत का, right? 73rd Amendment Act ने क्या कह दिया कि भाई देखो duration of the panchayat shall be 5 years. ठीक है? And if the panchayat is dissolved within the 5 years, then the election shall be held within 6 months. Right? And the new panchayat shall remain in the office for the remaining period. मान लो कि 2 साल बाद पंचायत डिसॉल्व हो जाता है, तो within 6 months election shall be held and that panchayat will remain only 2.5 years. ठीक है? वो जो 1 nation 1 election का जो प्रोविजन है वो वहीं से उठाया गया है. 1 nation 1 election में क्या है कि एक ही टाइम पे इलेक्शन हो जाएगा, स्टेट का भी और सेंटर का भी. ठीक है? जब तक चलेगा. मान लो कि कोई स्टेट का इलेक्शन मतलब डिसॉल्व हो जाता है, कोई भी हाउस, तो क्या होगा? इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑफ दैट स्टेट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ. ठीक है? फिर से जब
5वां साल होगा, then there will be election at this same time for all, national level, state level, of course ये 1 महीने के बाद ये भी इलेक्शन होना है. कौन सा? पंचायत. उसमें जो स्कीम है. So what is the duration of the panchayat? 5 years, right? 5 years. देखिए, एक लाइन लिखिए तो, if the panchayat is dissolved, if the panchayat is dissolved early, if the panchayat is dissolved early, if the panchayat is dissolved early, then election shall be held within 6 months. If panchayat is dissolved early, then election shall be held within 6 months of such dissolution. Election shall be held within 6 months of such dissolution. The new panchayat shall hold office till the remaining period. The new panchayat shall hold office till the remaining period. अब दूसरा ये है कि मान लो कि केवल कोई भी पंचायत है और वो लास्ट 4 मंथ में डिसॉल्व हुआ है, उसका क्या होगा? मान लो 4 मंथ एंटर किया है और डिसॉल्व हो गया. क्वेश्चन इज, विल इलेक्शन टेक प्लेस? नाउ लेट मी टेल यू, इट विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट. अगर मान लो कि 4.5 इयर्स के कंप्लीट होने के बाद डिसॉल्व हुआ है, then there shall be no election. क्योंकि 6 महीने बाद तो इलेक्शन नहीं होना है, तो इलेक्शन क्या होगा? Making sense, right? Okay. After this duration, let me talk about disqualification. बोलिए. After the dissolution of the panchayat, who takes over the panchayat? No one. It remain as it is. वहां पर सरकारी ऑफिसर भी होते हैं, जैसे बीडीओ है तो बीच लेवल पे, गांव में लेवल में है, इसको बोलते हैं ग्राम सेवक. सुना है? ग्राम सेवक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. इट इज नॉट इलेक्टेड ऑफिसर. द ग्राम सेवक इज अ सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत, राइट? और वो सारा काम करता है. Yeah, disqualification. Disqualification. Now disqualification क्या है कि how a member can be disqualified for being chosen, right? ठीक है. Now there is a law. If under any law for the time being in force for the purpose of election to the legislature of the state concerned, जो एमएलए पे लागू होता है ना डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो चीज इस पे भी लागू होगा. अच्छा, एमएलए पे क्या लागू होता है? एमएलए पे लागू होता है आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, राइट? 1951. अब ये क्या कहता है आरपीए 1951? कि इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम, राइट, whose sentence is 2 or more years, then that person will be disqualified from the member of the house. समझ में आया? कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया और उसका कोर्ट ने सजा दे दिया, कितना पनिशमेंट? 2 years or more imprisonment, then that person shall be disqualified from being member of the house. Now ये यहां पर भी अप्लाई होगा. ठीक है. उसके बाद ये कहता है कि अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई और
स्टेट लेजिस्लेचर अपना एक कानून बनाती है और डिस्क्वालीफाई करती है, दैट शैल बी आल्सो अप्लीकेबल, राइट? सो डिस्क्वालिफिकेशन लिखिए एज अप्लीकेबल टू एमएलए, एज applicable to MLA under RPA Act, under RPA Act 1951, as applicable to MLA under, ये MLA और MP दोनों पे लागू होता है, as applicable to MLA or MP under Representation of People Act 1951, under any specific law made by state. अगर कोई स्टेट कोई कानून बनाती कि भाई इस कारण से दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल शैल बी डिस्क्वालिफाइड, देन डिस्क्वालिफाइड. So what is the particular age for contesting मुखिया election? Not 25, 21 year. 25 है MLA के लिए. Which authority will decide disqualification? Here it is not written, right? Who shall be applicable? Of course the court. Of course the court. अगर कोर्ट ने मान लो, इसमें क्या होता है एमएलए और एमपी के केस में, कि अगर सजा मिल गई तो जो पार्लियामेंट है अपने आप डिस्क्वालीफाई कर देता है, जो भी सेक्रेटरी है, राइट? जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ था, यू रिमेंबर? राहुल गांधी के केस में ही वाज कन्विक्टेड एंड इमीडिएटली ही वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राइट? हियर मान लो कि इफ एनी पंचायत मेंबर इज sentenced, right, imprisonment 2 years or more, then, right, the local level, at the local level, right, that person, that ward member shall be disqualified. Okay. So that is disqualification. Seventh is about state election commission. State election commission. Now if you look at national election commission, इसके बारे में जो हमारा आर्टिकल 43 मेंशन करता है, otherwise there is no mentioning about a state election commission in the Indian constitution, right? आर्टिकल 243 मेंशन करता है, और आर्टिकल 243, certain provision of the article 243 empowers the governor to appoint the state election commission, right, to conduct, to supervise the election of the panchayat. Got the idea? So, right, like the 73rd Amendment Act empowers governor Article 243, 73rd Constitutional Amendment Act empowers the governor to constitute a state election commission, to constitute a state election commission, to direct, control, to constitute a state election commission, to direct, control, and conduct all election of the panchayat.
The 73rd CAA empowered the governor to constitute election commission to direct, control and conduct all election of the पंचायत. ठीक है, तो जो नेशनल इलेक्शन है, जो नेशनल हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, जो अभी एसआईआर कर रहा है ना, ये पर्टिकुलरली स्टेट इलेक्शन के लिए और जनरल इलेक्शन के लिए पर्टिकुलरली है, टारगेटेड है, राइट. ठीक है, अब इसका मतलब नहीं कि इसने जिसको इलीगल बना दिया है वो भी वोट करेगा विलेज में, ऐसा नहीं है, राइट. द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू वर्क विद इन द सुपरविजन ऑफ द नेशनल कमीशन. उनके डायरेक्शन के अंदर वो जा नहीं सकते उसके बियॉन्ड में, राइट. बट आप देखेंगे कि ईएसआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, holds national election and state election. जो लोकल इलेक्शन है, इट इज कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन. इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट. इफ इट इज नॉट गाइडेड एंड डायरेक्टेड सो फॉर द नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन. समझ में आया? स्टेट इलेक्शन कमीशन एक है, फाइनेंस कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन. स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है? बेसिकली इट इज एम्पावर्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन द 73rd CAA empowered the 73rd CAA empowered the governor of state to constitute a finance commission that the 73rd CAA empowered the governor to constitute a state finance commission at the expiration of every 5th years. At the expiration of every 5th year. मैंने आपको फाइनेंस कमीशन पढ़ाया हुआ है, राइट. अच्छा, फाइनेंस कमीशन का काम क्या था वहां पर फेडरलिज्म में? टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. यहां पर है टू रिकमेंड द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड द पंचायत. Write it. The State Finance Commission recommends to the governor. The State Finance Commission recommends to the governor for the revenue distribution between state and panchayat. State and panchayat. Now let me two more. 9. Look at the power and functions. Power and functions of panchayat. बेसिकली 2 पावर है. टू प्रिपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. दूसरा टू इंश्योर सोशल जस्टिस. These are the 2 basic work, right, that has been given to the panchayat.
Right. One another salient feature is 10th is 11 schedule. Consisting of 29 items. So these are the salient features of the 73rd Constitutional Amendment Act. Now look at the impact of the 73rd Constitutional Amendment Act. अगर आप करंट रिपोर्ट देखते हो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत का, you can find approximately we have 31 more than 31 lakh elected representatives, representatives at local level. मैं केवल पंचायत का बोल रहा हूँ, राइट. MOPR जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसके रिपोर्ट के हिसाब से we have more than 31 lakh elected representatives. Now out of 31 lakh representatives, if you look at, more than 40% are women. More than 40% elected representatives are women, right? More than 20% elected representatives are SCs. Okay? And if you look at, more than 10% elected representative are STs. Now that makes India largest democracy in the world. Look at this elected representative, 31 lakh elected representatives makes India the largest democracy in the world. And the power has been transferred without violence, let me tell you. Otherwise, आप देखेंगे कि caste based violence is very common in India. राइट जब पावर ट्रांसफर होता है तो बहुत लड़ाइयां होती है. आप देखेंगे कि एक रिजीम से दूसरा रिजीम जब आता है उसके बीच में काफी वायलेंस होता है, राइट. बट हियर वी कैन सी दैट देयर इज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन इंडिया. देयर इज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन इंडिया. व्हाई इट इज साइलेंट? बिकॉज देयर इज नो वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट. However, we can see it's not that there is a complete absence of violence, right? As far as village panchayat is concerned, आपको violence दिख जाएंगे, but that is exceptional, right? Now, if you look at this data, it reflects what this data reflects. भाई क्या है? India is the largest democracy in the world. Got the idea? Now, let me move to the fifth schedule areas. Should I talk about women and panchayat first? Now, let me talk about fifth schedule areas first. इतना लिख लिया? Done, everyone? लिखा? Now, let me talk about fifth schedule area. Then I'll talk about PESA. Yes, Taslim, sir, last में क्या लिखा है? 1 minute. 31 lakh elected representatives at local level we have, right? More than 40% elected representatives are women. Taslim, more than 20% elected representative are SCs basically, and more than 10% elected representative are ST. This above data reflects India is the largest democracy of the world. Right? This data, this number makes India as a largest democracy of the world.
So this is something 73rd Constitutional Amendment Act and its salient features. Now let me talk about fifth schedule area. अगर आप देखोगे ना एसटी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में. ये एसटी कब आया, टर्म कब आया शेड्यूल ट्राइब? Any idea when it has evolved, the term? What is the percentage of tribal we have? Yeah, approximately 7%, 8%, right? ठीक है? 8.6% of the total population. ये शेड्यूल ट्राइब आया कब? नहीं बताया मैंने फंडामेंटल राइट्स में. The Government of India Act, prepared a list of the scheduled caste, that is called scheduled caste, and similarly, Government of India Act 1935 prepared scheduled a list of tribal, that is called scheduled tribe. अच्छा, total number of ST कितना है हमारे पास? Total number of ST we have in India कितना? 700, yes, 701. सब डिस्कस हो चुका है हम लोग, राइट? अच्छा, जितने दूर में ट्राइबल लोग रहते हैं, पता है आपको कितना एरिया वो कवर करते हैं? एरिया ऑफ इंडिया दे कवर्स 11% ऑफ टोटल इंडियाज एरियाज ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो पूरे ट्राइबल है ना, ट्राइबल्स को हमने क्या किया है, ट्राइबल्स एरियाज को दो भागों में बांट दिया है. एक को कहते हैं फिफ्थ शेड्यूल, दूसरे को कहते हैं सिक्स शेड्यूल. अच्छा, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कितने स्टेट्स आते हैं? कितना? फिफ्थ में how many states fall under the fifth schedule areas? 4. फिफ्थ में है 10 स्टेट. There are 10 states which comes under the fifth schedule areas. अब वो 10 states कौन कौन है? जो आपको मिडिल मतलब सेंटर, इंडिया के सेंटर में दिख रहा है, इंडिया के पेट पे, राइट? अगर इंडिया का मैप रख दो और बीच में जो देखो 10 स्टेट्स है. आप 10 स्टेट्स में तो ऊपर से भी है, हिमाचल है, हिमाचल से नीचे आ जाओ तो राजस्थान है, राजस्थान से फिर आ जाओ इधर तो एपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, तेलंगाना है. ये टोटल 10 स्टेट्स हैं जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आते हैं. ठीक है. अच्छा, ये गवर्न कौन से आर्टिकल से होते हैं? ये सब इतना मैंने बता दिया था, फिर मैं बता देता हूं. शेड्यूल एसटी listed by Government of India Act 1935. ठीक है. टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन it's 8.6% of the total population. ठीक है. टोटल एरिया कवर्ड बाय ट्राइबल, एरिया कवर्ड बाय ट्राइबल्स, ये है आपका 11.3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. 3% ऑफ टोटल लैंड एरिया. ये कुछ डेटा है जो याद रखने की जरूरत है. फिर मैंने नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ एसटीज 701. ठीक है. दे आर गवर्न बाय, बेसिकली दे आर गवर्न बाय आर्टिकल 244 clause 1. ठीक है.
सीधा आर्टिकल 244 लिखो एंड आर्टिकल 275 जो ग्रांट्स मिलता है, राइट? दिस आर द इंपॉर्टेंट डेटा। ट्राइबल एरिया को कितने भागों में हमने बांटा है? टोटल 2 एरियाज, द 5th शेड्यूल एरियाज एंड 6th शेड्यूल एरियाज। मैं एक काम देता हूं आपको, आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है पीवीटीजी। पीवीटीजी बोलते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि ये है कौन, राइट? क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द पीवीटीजीज। मैंने बोला भी था शायद जब ट्राइबल ग्रुप पढ़ाया था, बताया था ना? अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं शेड्यूल एरिया के बारे में, राइट? Have you noted down these data about tribals? Now let me talk about schedule areas. Yes, online students, have you noted down? तूने लिख लिया कि कुछ डेटा जो है शेड्यूल ट्राइब के बारे में? तस्लीम लिखो, नहीं लिखा अभी तक तो राइट इट। कहीं पे कंफ्यूजन है आप पूछिए मुझे। लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935, कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ लेट मी मूव शेड्यूल एरिया। अब यहां पर हमारे पास है आर्टिकल 244 क्लॉज 1, क्लॉज में बता देता हूं 1। ये कहता है कि प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर कैन डिक्लेयर, राइट, एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। The president can increase the area as a scheduled area and president can decrease the area as a scheduled area। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि भाई कौन से एरिया को आप बोलोगे कि भाई ये एरिया पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, ऑन व्हाट रिकमेंडेशन? Now in that case you have one commission called Devar Commission Report 1961, right? And Devar Commission Report has given 4 criteria to decide particular area as a scheduled area, right? And the 4 criteria was preponderance of the tribal population, कि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा मतलब नंबर होना चाहिए। सेकेंड, यू मस्ट सी द compatible and reasonable size of the area, राइट? ये ब्लॉक हो जाए या गांव हो जाए, हैमलेट हो जाए या एक तहसील हो जाए, right? या डिस्ट्रिक्ट हो जाए, that is a better, right? So there should be a valid administrative entity like district, block, taluk, and then वहां पर देखना है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कि नहीं है, राइट? अगर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है देन that area, and economic backwardness in compared to the neighboring areas। ऐसा नहीं कि economic backwardness का मत, economic backwardness is a very much abstract concept। कुछ चीजें हमें तभी पता चलती जब when we compare, ठीक है? So economic backwardness as compared to the neighboring area, these are the 4 criteria given by Devar Commission। और मैंने जो आपको ये जो पीबीटी जी बताया है वो भी देवर कमीशन ने ही उसको इनलिस्ट किया था फर्स्ट टाइम में, राइट?
What governs our schedule area? Article 244, clause 1 basically talks about the schedule area. What is schedule area? An area which is defined by the president. लिखिए तो जरा schedule area के बारे में. देखिए आर्टिकल 244 clause 1 defines schedule area. Article 244 clause 1 defines scheduled area. It is an area. It is an area declared by the president. Declared by the president with after consultation with the governor. After consultation with the governor. It is schedule area. It is an area declared by the president of India. ठीक है, by an order. ठीक है, after consultation with the governor. Now second point you write, देखिए, the president can increase or decrease. The president can increase or decrease such area. The president can increase or decrease such area after consultation with the governor. The next point you write, they were commissioned 1961 suggested 4 criteria for declaring a new area as scheduled area. Areas. First, preponderance of tribal population. Second, compactness and reasonable size. Reasonable size of the area. Third, a viable administrative entity, like block, taluk, or district. Fourth, economic backwardness. तालुक को ही तालुका बोलते, कहीं पे तहसील बोलते, अलग अलग टर्म है तालुक. And fourth is economic backwardness. Economic backwardness of the area as compared with
as compared to the neighboring area. Neighboring areas. ये चार क्राइटेरिया है. These are the four criteria, right, for declaring an area as a scheduled area. Last वाला, ये वाला. Second one, compactness and reasonable size of the area. बिल्कुल compact होना चाहिए. Compactness and reasonable size of the area. Third, viable administrative entity like block, taluk, or district. Fourth, economic backwardness of the area as compared to the neighboring area. थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा इसको. उसके बाद एरिया कैन बी कॉल्ड शेड्यूल्ड एरिया. ठीक है. यस, लिखो इसको. इसको क्यों बोल दो रखने के लिए, कोई जरूरत नहीं इसका. लिखिए जरा लेबर कमीशन के बारे में. Have you noted down? Done? Yeah. Now, अब थोड़ा सा कुछ प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शेड्यूल एरिया के बारे में. और ये प्रोविजन कहता है कि the governor of each state shall submit annual report to the president about the administration of the schedule area. जहां जहां पर एरिया है, ये कितने स्टेट में है शेड्यूल एरिया? आई टोल्ड यू कितने स्टेट में है ये? 10 स्टेट्स में. देयर आर 10 स्टेट्स जहां पर ये शेड्यूल एरिया है. पर इसका मतलब नहीं कि जहां पर शेड्यूल एरिया है वहीं पर ट्राइबल है. देयर आर ट्राइबल्स बियॉन्ड इट, लाइक तमिलनाडु में है ट्राइबल, बट तमिलनाडु का जो कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया में आता नहीं है. वेस्ट बंगाल में ट्राइबल है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल एरिया, राइट. तो यहां पर क्या है कि right, लिखिए प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज. कुछ प्रोविजंस है दैट वी हैव टू नोट डाउन. फर्स्ट लिखिए गवर्नर्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, राइट. जो गवर्नर है ना उस स्टेट का जहां पर ये शेड्यूल एरिया फॉल करता है, that governor is responsible to submit an annual report to the president about administration of the schedule area in that state. ठीक है. उसके बाद जो है इसको लिखवा देता हूं. लिखिए तो जरा इसको थोड़ा डिटेल्स लिखिए तो. देखिए, the governor is responsible to submit. Are you writing? Dancing बढ़िया से कर लो. The governor is responsible to submit an annual report. The governor is responsible to submit an annual report The governor is responsible to submit an annual report about administration of the scheduled area, about administration of the scheduled area to the president.
The governor is responsible to submit an annual report about the administration of the scheduled area to the president. दूसरा है एडवाइजरी काउंसिल. एडवाइजरी काउंसिल अब ये कहता है राइट कि फिफ्थ शेड्यूल पैराग्राफ 4 ये कहता है कि देयर शैल बी एडवाइजरी काउंसिल इन ईच स्टेट राइट हैविंग फॉलिंग अंडर शेड्यूल एरिया. देयर विल बी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कितना मेंबर होगा? नॉट मोर देन 30 राइट. आउट ऑफ 30 3/4 shall be the representative of the scheduled tribe in the legislative assembly of that state. यानी 3/4 जो है 75% of the member should be from the MLA of the tribal areas. Right? So लिखिए जरा. There shall be a tribal advisory council. There shall be tribal advisory council. There shall be tribal advisory council consisting of not more than 30 members. There shall be tribal advisory council not more than 30 members in which 3/4 members should be tribal MLAs. पैराफ्रेज कर दिया मैंने. 3/4 members shall be tribal MLAs. Okay. The functions of the tribal advisory council. The function of the tribal advisory council. The functions of the tribal advisory council to advise for the welfare and advancement. To advise for welfare and advancement of the scheduled tribes. For the welfare and advancement of the scheduled tribes in the scheduled area. अब मैंने एक चीज और बता देता हूं कि ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है टीसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये तो 10 स्टेट्स में है ही है राइट जहां पर शेड्यूल्ड एरिया फॉल करता है. इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट लाइक तमिलनाडु उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल राइट. ये पॉइंट लिख लीजिए. तो देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल tribal advisory councils are constituted for all 10 states. Tribal advisory councils are constituted for all fifth schedule area states. Okay, but states like Tamil Nadu, West Bengal, and Uttarakhand Tamil Nadu, West Bengal, and Uttarakhand does not fall in fifth schedule area. States like Tamil Nadu, West Bengal, and Uttarakhand does not fall in the fifth schedule area, but it has tribal advisory council.
but it has travel advisory council. ठीक है, ये दूसरा है. तीसरा, दैट इज लास्ट प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया. अब मान लो कोई कोई कानून है, चाहे पार्लियामेंट का लॉ है चाहे स्टेट लॉ है, will it be applicable as it is? The answer is no. Right? Now governor will specify, right, whether which law of the parliament or the state, legislature shall be implemented in the scheduled area or not. Right? Or whether the revised form of the law shall be implemented in the fifth scheduled area or not. Who is the governing authority? Who is that authority? The governor. So law applicable to scheduled area. Law applicable to scheduled areas. Okay, the governor of the state has authority. The governor of state has authority. The governor of state has authority to decide. The governor of the state has authority to decide whether parliamentary law or state law. The governor of the state has authority to decide whether parliamentary law or state law shall be implemented. The governor has authority whether the parliamentary law or state law shall be implemented in the scheduled area or not. ठीक है, scheduled area or not. ये प्रोविजन है. एंड कल हम लोग दैट विल डिस्कस पैसा, पंचायती राज extension in scheduled area, the PESA Act, right? The PESA Act was actually, PESA Act is in operation in the scheduled area. तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको scheduled area बता दूं कि है क्या ये scheduled area. Very important. फिल्म्स में scheduled area के बारे में कुछ भी प्रोविजन पूछ सकते हैं और पूछा है. There is a tradition. आज इतना ही. If you have any query, question, थोड़ा आर्टिकल 244 आप देख लेंगे घर पे. एंड आई हैव गिवन यू टास्क टू लुक एट पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में. किसी को पता है कि इनके लिए कोई स्पेशल स्कीम है? इफ यू नेम द स्पेशल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पीबीटीजी. नो, याद नहीं आ रहा है. मैं थोड़ा याद कर रहा हूं. वो नेशनल एंथम से शुरू होता है. हमारा जो नेशनल एंथम है, आई होप दैट यू रिमेंबर. जनमन, पीएम जनमन योजना. जनमन, यस तस्लीम, राइट. पीएम जनमन योजना, राइट. तो थोड़ा इसको पीबीटीजी के बारे में देखेंगे आप लोग, राइट. ट्राइबल यहीं तक पैसा एक्ट पढ़ा के देन मोर वेलफेयर स्कीम्स क्या है विल सी इन गवर्नेंस चैप्टर. ठीक है. Anyone who have gone through Indian Express yesterday? Are you reading newspaper? Indian Express पढ़ा किसी ने? बहुत बढ़िया. Do you know European Union has a good trade deal with India? थोड़ा सा देखिए, अगर 2026 में जो लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्रम्प के ऊपर ध्यान रखिए कि ट्रम्प कर क्या रहा है. ठीक है.
थोड़ा सा गवर्नमेंट जो जो भी इनिशिएटिव ले रही है इस साल में, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यस, शरिता, ओजस्वी, मुस्कान, फुरदीन, अमन, तस्लीम, तमन्ना, कोई सवाल पूछो। नहीं तो फिर इसके बाद आप कपिल शर्मा का शो देख लो, दैट वुड बी बेटर। चलो, सी यू टुमारो एवरीवन।